Good morning, all of you. आज हमें another prelims mock test discuss करिबा तार answer and explanation. But before that, मते टिके एठी clear कर दियंतु. I'm giving 1 minute. जे भी लाइव चैट रे ऑनलाइन अछंदी कि ऑडियो क्लियर अछि कि नाही एंड एठी गोटे मु पीडीएफ ओपन करि कि रखिछि किछि एनोटेट करूछि से पीडीएफ ऊपर सेटा क्लियर अछि कि नाही. ओके ठीक अछि. तो आजिर सेशन रे भी हमर 50 टा क्वेश्चंस रहइबो टोटल 100 मार्क्स रहइबो टोटल. ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. एटा तो जानि थिबे. आई होप समस्त टेस्ट अपियर करूथिबे. 1 आवर आपनकर थिबो टोटल टाइम टेस्ट रो. सो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हमें देखिबा को स्टेटमेंट करेक्ट अछि को स्टेटमेंट रॉन्ग अछि ता साथ ही साथ रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स भी हमें डिस्कस करिबा. एंड जोड़ा प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन वी विल जस्ट नो द आंसर एंड मूव फॉरवर्ड टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम. ठीक अछि. एंड पर क्वेश्चन जो मैंने रेगुलरली क्लास करछथि से जानि थिबे कि मु 10 to 15 सेकंड सेठी टाइम देबी समस्त को एडी लाइव अटेम्प्ट करिबा को. क्वेश्चन नंबर 1, consider the following statements regarding the political condition of North India before Babur's invasion. Babur's invasion पूर्वरु North India रे कोन political condition थिला ता ऊपरे किछिटा statement देइछि. Read the statement and answer in 10 seconds. First statement कहला Ibrahim Lodi faced opposition from Afghan nobles due to his centralizing policies. एटा करेक्ट अछि कने इब्राहिम लोदी से कोन करतले. He tried to centralize power reducing the autonomy of Afghan nobles. तो एमाने कोन कले एमाने रिवोल्ट कले एमाने ताको विरोध रे opposition कले. सो तांकर जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ता थिला सी कोन कला. This angered nobles like Daulat Khan Lodi. जहाज गुरु कौन हैला. इट लेड टू इंटरनल रिबेलियंस एंड जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आसिला इट वीकेंड द दिल्ली सल्तनत. तो एटा हमर करेक्ट अछि. राणा संघा एम्ड to establish Rajput supremacy in North India. This is also correct. राणा संघा जो मेवार थिले ताकर एम एटा थिला कि से केमिति राजपूत सुप्रीमेसी नॉर्थ इंडिया रे से एस्टैब्लिश करिवे. ही एक्सपैंडेड हिज इन्फ्लुएंस इन राजस्थान and Malwa and सी लोदीस मानक भी चैलेंज करथिले. The Gujarat Sultanate actively invited Babur to invade India. This is incorrect. से माने कौन थिले से माने थिले Afghan nobles.
ଯେମିତି କି ଆମର ଦୌଲତ ଖାନ ଲୋଧି ହେଲେ ଆଲମ ଖାନ ହେଲେ ଯିଏ କି ବାବର କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ଟୁ ଇନଭେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନଟ୍ ଗୁଜରାଟ ସଲ୍ତନତ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଇନକରେକ୍ଟ। ଆନ୍ସର ହବ 1 ए। Consider the following statements regarding Babur. बाबर को ऊपर एटी किसटा स्टेटमेंट देइची, read them and answer. Yes, जो माने वर्षा साहू तांकर आंसर करेक्ट अछि, वेरी गुड। A is the correct answer of question number 1. ओके, तो आम स्टेटमेंट देखा। फर्स्ट स्टेटमेंट कहला ही क्लेम डिसेंट फ्रॉम बोथ तिमूर एंड जंगेज खान। दिस इज करेक्ट। बाबर क्लेम डिसेंट फ्रॉम देम, ठीक अच्छी। आंकठू फादर्स का साइड रू, आंकठू मदर्स का साइड रू। दिस गेव हिम स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। सॉरी, बाबर नामा वाज ओरिजिनली रिटेन इन पर्शियन। एटा एक्चुअली इनकरेक्ट अच्छी। इट वाज ओरिजिनली रिटेन इन छगताई टर्किश, नॉट पर्शियन। लेटर एटा को पर्शियन को ट्रांसलेट करा गला, ठीक अच्छे। ओरिजिनली एइथरे लेखा आइची। ही डिस्क्राइब्ड इंडिया एज लैकिंग गुड हॉर्सेस इन हिज मेमोइर्स। बाबर एटा करेक्ट अछि, काना बाबर इंडिया को क्रिटिसाइज करथिले इन हिज मेमोइर्स, नोटिंग कि एथि गुड हॉर्सेस नाही, किछि सर्टेन एम्यूनिटीज नाही कंपेयर्ड टू सेंट्रल एशिया। सो दिस इज करेक्ट। एक्चुअली यस, दिस इज इनकरेक्ट। हला 2 हमर कटि गेले, 1 and 3 हबो। Consider the following with reference to the Battle of Panipat 1526. Consider the following. It marked the end of Delhi Sultanate. एटा करेक्ट अछि। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो थिला, इट लेड टू डिफीट ऑफ हुम। एटी किए डिफीट हेइथिले? लेड टू द डिफीट ऑफ इब्राहिम लोदी, marking the end of the Delhi Sultanate. Correct. Babur used gunpowder weapons effectively. This is also correct. Babur gunpowder technology को effectively use करतले, जेमती कि artillery हे गला, cannons हे गला, तुलुगमा, artillery, cannons, तुलुगमा, आउ गोटे को टैक्टिक थिला, Araba tactics, एवडा सब tactics, ठीक अछि। This gave him a major advantage over the Lodi's traditional army. It resulted in immediate Mughal control over entire India. No, this is correct. Entire India ऊपर immediately पूरी Mughal control केमती आइजिबा? The statement is kind of very extreme. Mughal control was not immediate over entire India. बाबर को आहुरी भी battles fight करिया को पड़िथिला, जेमती कि खानवा खानवा के बेइतला 1527 रे अगेंस्ट राणा संघा। एंड आउ गोटे कोन बैटल थिला? चंदेरी 1528. Full consolidation happened later under Akbar, किंतु इटा incorrect अछि। So 1 and 2 हबो हमर correct answer. Consider the statements regarding the battle of Khanua.
Statement 1, it fought between Babur and Rana Sangha. Correct अछि, just हमें ऊपर discuss करें. It completely destroyed the Rajput power in North India permanently. It is incorrect. It did not completely destroy the Rajput power permanently. सेटा भी Rajput से मैंने they continued to remain powerful. For example, राणा प्रताप भी आसीथिले परे ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଟେମ୍ପରାରିଲି ୱିକ୍ ବନେଇଦେଲା. ଇଟ୍ ୱିକେଣ୍ଡ ଦେମ୍ ଟେମ୍ପରାରିଲି ବଟ୍ ନଟ୍ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଏଲିମିନେଟେଡ୍. ହସନ ଖାନ ମେୱାତି ସପୋର୍ଟେଡ୍ ରାଣା ସାଙ୍ଘା. ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଅଛି. ସିଏ କାହାର ରୁଲର ଥିଲେ? ହି ୱାଜ୍ ଦ ରୁଲର ଅଫ୍ ମେୱାତ. ସପୋର୍ଟେଡ୍ ରାଣା ସାଙ୍ଘା ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ବାବର. ଦିସ୍ ଇଜ କରେକ୍ଟ. ଆନ୍ସର ହବ 1 and 3. Consider the following statements regarding Sher Shah Suri. He started his career under the Lodhis. This is correct. Sher Shah, he began his career under the Lodhi rulers. Later, से कहाँ को सर्व करते? He served Bihar governors. ठीक अछि, एटा करेक्ट हबो. He defeated Humayun at Chausa and Kanauj. This is also correct. से हुमायून को डिफिट करथिले at battle of Chausa. केबे हेतिला? 1539 रे. and battle of Kanauj battle और बिलग्राम battle भी जहाँ को हमें कहिताऊ 1540. He died during the siege of Kalinjar. This is also correct. He died in 1545 during the siege of Kalinjar fort due to a gunpowder explosion. Answer above all the above. Option number D. With reference to Sher Shah's administrative reforms, Sher Shah administrative reform ऊपर किस्टा एटी statements देजी. Read and answer. आंसर हम फर्स्ट आम स्टेटमेंट देखा इंट्रोडक्शन ऑफ रुपया आज स्टैंडर्ड कॉइन. करेक्ट अच्छी. इंट्रोडक्शन ऑफ रुपया सिल्वर कॉइन जोड़ा थिला बेसिस ऑफ मॉडर्न रुपी. कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. से कौन करते बिल्ड करते और इम्प्रूव करते ग्रैंड ट्रंक रोड को. ठीक अच्छे. एंड एटा कोठू को जाए थिला सोनार गांव टू पेशवार. ठीक अच्छे. and he also established jago कहउथले सराइज. सराइज कोन? रेस्ट हाउसेस मन को सराइज कहउथले. इंट्रोडक्शन ऑफ मनसबदारी सिस्टम. मनसबदारी सिस्टम बहुत पछरे सेटा एक्चुअली इंट्रोड्यूस करा गला अंडर अकबर. ठीक अच्छे. नॉट शेर शाह. Answer above B. 1 and 2 only. Okay, read the question here. Audita option में audita statement में भी next page रे अछि. Consider the following statements regarding Humayun. Humayun को ऊपर एडी किस्टा statement देछि. Let me हाँ ए तीनटा statement को पढ़ो and answer it.
Statement 1 कहला it was defeated at the battle of Chausa. This is correct. हुमायून हमें ऊपर डिस्कस कले हुमायून को किए से बैटल ऑफ चौसा रे डिफीट करथिले शेर शाह सूरी. We have already discussed that. And battle of Chausa के बेइतला 1539 रे. He spent his exile in Persia. This is correct. Defeat पर हुमायून को कले exile को गले in Persia Safavid Empire. And तांकु सेठी सपोर्ट किए देइतले शाह तहमास्प. Supported by and से तांकु सपोर्ट करथिले to regain power. Statement number 3, he immediately regained power after Babar's death. This is incorrect. बाबर का डेथ के बेइतला 1530. ठीक अछि. हुमायून he became the ruler but did not immediately consolidate power. तांको रूल टा unstable थिला. So eventually defeat asla then exile. This is incorrect. Answer above 1 and 2. Consider the following battles and their outcomes. ऑलरेडी एगुड़ा घाघरा को छाड़ी के दिटा में डिस्कस करते हैं. चौसा कौन डिफीट ऑफ हुमायून करेक्ट अच्छी. कनौज विक्ट्री ऑफ हुमायून दिस इज इनकरेक्ट. कनौज हमें कौन डिस्क्राइब करते इट वाज अगेन अ डिफीट ऑफ हुमायून नॉट अ विक्ट्री. सो एटा कौन कला एटा मुगल रूल को टेम्पोरारीली एंड करथिला. घाघरा एटा करेक्ट अच्छी. विक्ट्री ऑफ बाबर. बाबर कौन करथिले अफगान फोर्सेस मानको डिफीट करथिले इन बैटल ऑफ घाघरा जोटा केबे हितला 1529. आंसर अब B 1 and 3. Consider the following statements regarding Afghan power. Statement 1, Afghan nobles prefer tribal autonomy. Correct अच्छी. कहना से मैंने tribal autonomy और decentralization को value करूँतले unlike centralized Mughal system. Afghan unity remained strong after Sher Shah's death. This is incorrect. कहना शेर शाह को death पर Afghan unity collapse करी जाइतला due to internal conflicts. Afghan were eventually reduced to zamindars under the Mughals. This is correct. कहना Mughals का under रे कौन हैला बहुत Afghans मान को zamindars व local chiefs हिसाब रे reduce कर दिया गला. तंगर position को reduce कर दिया गला. And they also lost the imperial dominance. Answer about 1 and 3. Question number 10. Consider the following statements regarding Rajputs. They relied heavily on gunpowder warfare. This is incorrect. कहना राजपूत्स मेनली कहा ऊपर ट्रेडिशनल वॉरफेयर ऊपर रिलाई करूतले जेमती कैवलरी हे गला सोर्ड्स हे गले एलिफेंट्स हे गले गन पावर वॉरफेयर ऊपर से एतडा रिलाई करूनथले. दे डिड नॉट हेवीली यूज गन पावर अनलाइक बाबर. दे वेर डिवाइडेड इनटू सेवरल क्लान्स. दिस इज करेक्ट. कहना से माने जो राजपूत्स माने थिले तांको डिवाइड कर दिया जाइतला इनटू मेनी क्लान्स. फॉर एग्जांपल सिसोदियाज, राठौर्स एटसेट्रा, लीडिंग टू लैक ऑफ यूनिटी. जेतेबेले ताको बहुत एमती फ्रैगमेंट कर दिया जाइतला इनटू वेरियस क्लान्स तो सेतेबेले ताकर यूनिटी भी एतटा नथिला. राणा संघा फॉर्मड अ कॉन्फेडरेसी. दिस इज करेक्ट. राणा संघा से गोटे कॉन्फेडरेसी फॉर्म करथिले ऑफ राजपूत रूलर्स अगेंस्ट बाबर.
Against whom? Against Babur. Statement correct habo 2 and 3. Consider the following statements. Babur defeated Ibrahim Lodi in 1526. Rana Sangha died before the battle of Khanua. अभी तो कितना करेक्ट अछि? This one is correct. Babur defeated Ibrahim Lodi in 1526. And এটা কোডি এটা কোন Panipat. Incorrect. Rana Sangha died before Battle of Khanwa. It was incorrect. And Rana Sangha fought in the Battle of Khanwa. जोटा हमें already discuss कर Battle of Khanwa के बे हितला 1527 रे. And he died actually later. Answer above 1 only. With reference to the Mughal military system, consider the following. Question number 12. Use of artillery was a key advantage. Yes, artillery gote semane use korthile eta gote advantage thila. Emphasize on mobility and cavalry tactics. Yes. Central Asian style eta semane mobility और cavalry tactics ऊपर focus करती. Complete reliance on the war elephants. Complete reliance war elephants तांको ऊपर इतना primary reliance नथिला. So मुगल मानकर जो success थिला इठु हमें इटा artillery, mobility plus tactics. Answer above 1 and 2. B. Consider the following statements regarding Sher Shah's revenue system. Land measurement was introduced. Yes. Patta but title au kabuliyat system was used. Patta kono title and kabuliyat system kabuliyat kono agreement. Eta use hotila. Yes, use hotila. Revenue demand was fixed arbitrarily. Arbitrary revenue no. Actually revenue demand jota thila, it was systematic and measured, not arbitrary and measured. Answer amar kon answer above 1 and 2. Question number 14. Consider the following statements regarding Babur's consolidation. Babur's consolidation upar it is statements kichta dechi tinta. Read the statements and answer in 10 seconds. He granted Jagirs to local chiefs. Yes. And से कौन पाएंगे जागीर्स ग्रांट करथिले लोकल चिफ्स मानको टू सिक्योर देयर लॉयल्टी. He annexed Bengal completely. Bengal annex heithila no, not fully under Babur. So this is incorrect. Afghan resistance. He faced Afghan resistance. Yes. Continuous challenge thile Afghan mane. So answer aba amara 1 and 3. Consider the following statements regarding Humayun's restoration.
he defeated Sikandar Suri at Sirhind. This is correct. And se ko kebe eta heitila 1555. He regained Delhi in 1555. Yes, after he defeated him. His rule stabilized immediately after return. Immediate stability? No. Actually, he died soon in 1556. Right? Tankara death heitla. The answer above 1 and 2. Consider following statements. And pacharchi ketata ta vidru correct habo. Sher Shah's road network improved trade and communication. Yes, road improved trade. Sarais were built along major routes. Yes, eta bhi correct achi. Roads were only used for military purposes. Nine roads are also used for trade, communication, etc. The answer above 1 and 2. Question number 17. तीनटा फीचर देइछि एंड पचारछि आ भितरु केतोटी फीचर बाबर्स कर warfare feature. Which of the above were features of Babur's warfare? तुलुगमा टैक्टिक कौन थिला मन रखिबे एटा होछि गोटे फ्लैंक. दिस इज फ्लैंकिंग ऑफ मूवमेंट. तुलुगमा टैक्टिक. यूज ऑफ आर्टिलरी जेंति गन पाउडर यूज करूथिले. गन पाउडर एडवांटेज तांकर पकरे थिला. वागन लेगर सिस्टम आकु आरबा सिस्टम भी कहती. एटा गोटे डिफेंसिव कार्ड्स अरेंजमेंट. ऑल वेर यूज्ड बाय बाबर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. किसटा स्टेटमेंट देछि पचारछि करेक्ट कोन. Sher Shah's administration influenced Akbar. This is correct. Sher Shah's administration जेमती कि तांकर revenue system है roads बा currency बा policing it strongly influenced Akbar. Akbar तापरे कौन करथिले से जो लैंड रेवेन्यू हैला कि एडमिनिस्ट्रेशन रोड नेटवर्क आकु आहुरी रिफाइन करथिले. सो दिस इज करेक्ट. मुगल सक्सेस वाज पार्टली ड्यू टू गन पाउडर टेक्नोलॉजी. दिस इज आल्सो करेक्ट. आमे ऊपर केते सारा गन पाउडर टेक्नोलॉजी ऊपर डिस्कस कर सारलेनी. सो मुगल सक्सेस जोडा थिला इट वाज सिग्निफिकेंटली ड्यू टू गन पावर टेक्नोलॉजी. आर्टिलरी फायर आर्म्स सबुतरे यूज होतला. सो दिस gave them a decisive edge over the traditional armies. जो पानीपत और खनवा रे तांकर बैटल हेतला.
Rajput were completely eliminated after Khanua. No, this is incorrect. हमें ऊपर भी discuss करचे. Rajputs were not eliminated after Khanua. They remained powerful. Answer number 1 and 2. Consider the following statements. And पचारची correct केतेटा. क्वेश्चन आंसर कला बेले सब बेले एटा नोटिस करूथिबे कि करेक्ट पचारची कि इनकरेक्ट पचारची दो जदि आपन को ठीक इन्फॉर्मेशन भी जणाथिबो नॉलेज जणाथिबो जदि पढिबे नै ठीक से कि इनकरेक्ट पचारची कि करेक्ट पचारची ताले इनकरेक्ट पचारथिले सेठी करेक्ट मार्क करिके आसीबे एंड इवेंचुअली नेगेटिव मार्किंग हे जिवो Babur's invasions were supported by some Indian nobles. This is correct. Babur कौन करथिले? He was invited by Indian nobles. जेमति कि दौलत खान लोधी and Alam Khan. They invited Babur to invade India. Afghan resistance ended completely after 1526. Led by Sher Shah Suri, later Mughal faced continuous challenges. This is actually incorrect. Bengal remained independent initially. This is correct. Kana Bengal kon thila initially se independent thila under its own rulers. It was not fully annexed by Babur. Answer number 1 and 3, option number C. Consider the following statements and pacharchi correct keteta. Sher Shah introduced efficient espionage system. This is correct. Sher Shah को गोटे strong espionage system थिला माने कोन buried system भी जाकू कहउतिले to monitor officials. To monitor officials. He separated military and civil administration completely. No. सेतबेले किसी भी कंप्लीट सेपरेशन नथिला मिलिटरी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रे ऑफिशियल्स मानू को कंबाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाउतिला हिज रिफॉर्म्स लेड फाउंडेशन फॉर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन दिस इज करेक्ट ताको जो रिफॉर्म थिला बिकेम द फाउंडेशन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली अंडर अकबर आंसर अब 1 and 3 consider the following statements regarding money creation in India. Commercial banks create money through the process of credit creation. Correct अच्छी कारण जो commercial banks हमर अछंदी इंडिया रे they create money through credit creation. जोठी की कौन हुए banks माने कौन करंती loans provide करंती deposits नियंती so it increases the money supply. The money multiplier is inversely related to the cash reserve ratio. Correct. High the CRR जदि high हबो banks मानक पाखरे कोन रहिबो more reserves रहिबो and less lending हबो banks माने कोन करबे ताकर reserves बढ़ेबे काइना CRR high हे जाइची तो से माने कोन करबे lending कम लोन से माने ग्रांट करिवे they will lend less it will lower the multiplier therefore money multiplier ta inversely related to cash reserve ratio. High currency deposit ratio increases the effectiveness of the money multiplier. Actually this is incorrect काना high currency deposit ratio माने हैला लोक मानक पाखरे more cash अछि high CDR होची
people hold more cash, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାଶ ଅଧିକା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପାଖରେ କ୍ୟାଶ ଅଧିକା ରଖିକି ବସିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କସରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ less money is available for banks to lend, less lending by banks which reduces multiplier। ठीक ଅଛି। So high currency deposit ratio does not increase the effectiveness of money multiplier। ठीक अछि। तो एठी एमती देखि परिबे जो मनी मल्टीप्लायर कथा कुआ जाउची, मनी मल्टीप्लायर विल डिक्रीज जेतेबेले सीआरआर इंक्रीज करिवो एंड सीडीआर इंक्रीज करूथिबो। ओके, आंसर हमर एठी कोन हबो? ए 1 and 2। Consider the following statements regarding high powered money। It includes currency in circulation and bank reserves with RBI। This is correct। And high powered money कहले हमें कौन बुझू? हाई पावर्ड मनी रे कौन कौन इंक्लूड होची? करेन्सी इन सर्कुलेशन एठी लिखिला एंड बैंक रिजर्व्स विथ आरबीआई। बैंक मानकर जो रिजर्व से माने पार्क करी रखुछन आरबीआई रे, सेटा भी एतरे इंक्लूड होची। सो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई। दिस इज आल्सो करेक्ट। आकु आरबीआई डायरेक्टली कंट्रोल करे। आल्सो रिजर्व मनी बा मॉनेटरी बेस आकु कुहा जाए। इट इज आल्सो नोन एज द ब्रॉड मनी। दिस इज इनकरेक्ट। ब्रॉड मनी जाको हम M3 कहिताउ, दिस इज नॉट कॉल्ड ब्रॉड मनी। M3 कोन? M3 होची करेंसी प्लस डिपोजिट्स, जोटा को लार्ज मेजर ऑफ मनी सप्लाई कुआ जाए। दिस इज नॉट रिजर्व मनी। आंसर अब 1 and 2। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। मेजर देला, कंपोनेंट देला, पचारची केतरा पेयर करेक्टली मैच हेइचंती। M1 होची करेंसी प्लस डिमांड डिपोजिट्स। करेक्ट अछि। M1 रे कोन इंक्लूड हबो? करेंसी विथ पब्लिक, पब्लिक मानक पर केते करेंसी अछि, एंड डिमांड डिपोजिट्स। डिमांड डिपोजिट्स माने कोन? करंट प्लस सेविंग अकाउंट्स जाय, दीटा जक जीवो डिमांड डिपोजिट्स रे। M3 होची M1 प्लस टाइम डिपोजिट्स। दिस इज आल्सो करेक्ट। M1 माने एठी दीटा जक जीवो M1 रे जा इंक्लूड होची। देन टाइम डिपोजिट्स। टाइम डिपोजिट्स माने जो फिक्स डिपोजिट्स बैंक मानक करे थाए तो टाइम डिपोजिट्स कोंती। मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू मेजर used measure in India। M3 M4 होची M3 plus post office deposits। this is also correct। ठीक अछि। एंड M1 को एठी मन रखिबे, M1 को नैरो मनी कुआ जाए, नैरो मनी, एंड M3 को ब्रॉड मनी। आंसर हबो ऑल थ्री।
with reference to the Monetary Policy Committee, consider the following. It consists of 6 members. Yes, correct अछि. 6 members भितरु तीनिटा तीन जण आरबीआई रु थांती एंड तीन जण एक्सटर्नल मेंबर्स थांती जो मानको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करे. तीन जण मेंबर जो आरबीआई रु थांती सेथरे गवर्नर आसी जिवे, आमर डेप्यूटी गवर्नर आसीबे एंड आउ जणे ऑफिसर, वन ऑफिसर एंड बाकी जो तीनटा एक्सटर्नल मेंबर रहिले तांको गवर्नमेंट अपॉइंट करे. All members are appointed by the government of India. No, only 3 external members are appointed. It decides the policy repo rate. Yes, MPC decides the policy repo rate, जोटा कि गोटे key monetary policy decision. Answer about 1 and 3, option number A. Consider the following statements regarding inflation targeting in India. The target is 4% with a tolerance band of 4 plus minus 2%. Yes, this is correct. It is based on wholesale price index. No, this is incorrect. Actually, it is based on CPI, jaako consumer price index kuha jaye. It was introduced in 2016. Yes, this is correct. Jetabale RBI Act 1934 को 2016 रे amend करागला. It was introduced at that time. Answer is 1 and 3. Consider the following statements regarding repo rate. It is the rate at which RBI lends money to commercial banks. This is correct. Repo rate hochi rate at which RBI lends to banks. Increase in repo rate helps in controlling the inflation. Repo rate increase hele kon habo? Increase in repo rate, it will lead to borrowing cost kon hoy jibo? Increase kar jibo. Repo rate hochi जेतबे RBI lends to commercial banks, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତା ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦେବ, ମାନେ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଧର ଆଗରୁ 5% ରେଟ୍ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବଢ଼େଇକି 10%, ତାହେଲେ ଏବେ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ନିଜ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ସେମାନେ ଲେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼େଇ ଦେବେ. ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ବରୋଇଂ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ. So it will reduce the demand and inflation control रे आसीबो. ठीक अछि. Increase in repo help in controlling the inflation. This is correct. It directly increases liquidity in the economy. No, this is incorrect. एठी त हमें देखिले ना कि जेतबे demand reduce होउची, increase in repo rate reduce the liquidity, not increase it. Answer is 1 and 2, option number B. Consider the following statements regarding reverse repo rate.
It is the rate at which banks borrow from RBI. करेक्ट अच्छी कहीं रेपो रेट आम देखले रिवर्स रेपो रेट तार उल्टाटा ठीक अच्छे दिस इज इनकरेक्ट रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम द बैंक्स नॉट वाइस वर्सा बैंक्स बोरो जो आरबीआई ठारू सेटा आम देखले सेटा होचे रेपो रेट इट हेल्प्स इन अब्सॉर्बिंग एक्सेस लिक्विडिटी दिस इज करेक्ट कहीं ऊपर जो स्टेटमेंट थिला सेटा एक्चुअली रिवर्स रेपो रेट रो इट हेल्प्स अब्सॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम रिवर्स रेपो माने कोन लिक्विडिटी अब्सॉर्प्शन टूल एटा गोटे रिवर्स रेपो आंसर हम बी टू ओनली कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स टूल देजी फंक्शन देजी पढ़ी करी एटी कहंतु कोटा केतरा करेक्टली मैच हेजी सीआरआर रो फुल फॉर्म कोन कैश रिजर्व रेशियो कंट्रोल्स मनी मल्टीप्लायर ऊपर आम गोटे क्वेश्चन रे देखीचे केमती मनी मल्टीप्लायर सेटा कंट्रोल करे सो एटा करेक्ट हबो काइना इट कंट्रोल्स मनी मल्टीप्लायर बाय अफेक्टिंग द लेंडिंग कैपेसिटी एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंश्योर्स लिक्विडिटी एंड गवर्नमेंट बोरोइंग यस लिक्विडिटी आउ सपोर्ट करे गवर्नमेंट बोरोइंग को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ओएमओ कोन ओपन मार्केट ऑपरेशन इट डज नॉट डायरेक्टली फिक्स द रेपो रेट से कौन करे सी भी लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करे बट इनडायरेक्टली आंसर about only 2 consider the following statements regarding the SLR statutory liquidity ratio it is maintained in the form of liquid assets कोन gold आसी जिबा हमरो government securities आसीबो cash आसीबो एगुडा को जे liquid assets so this is correct it is kept with the RBI no it is not kept with the RBI banks माने से तांकरी पाखरे रखंती तो एटा इनकरेक्ट हेगला it helps in government borrowing yes it helps government borrow by creating demand for the G6 by or the government securities आमे जाको कहिताउ 1 and 3 consider the following statements regarding the OMO it involves buying and selling of the government securities yes correct RBI कौन करे बिका किना करे buys and sells the government securities under OMO it affects long term interest rates this is also correct long term interest rate और liquidity को ये influence करे it is a qualitative tool of monetary policy no this is a quantitative tool not qualitative tool answer about 1 and 2 consider the following statements regarding marginal cost of funds based lending rate MCLR it replaced the base rate system correct MCLR से कौन कला base rate system 2016 रे ताकू replace कला it is linked to external benchmarks like repo rate this is incorrect कारण MCLR होची गोटे internal benchmark not external it varies across the loan tenures yes different MCLRs थाए overnight ପାଇଁ କି ଅଲଗା थाए for overnight 1 month 6 month 1 year loan eso alga alga थाए answer aba 1 and 3 consider the following statements regarding the external benchmark lending rate it is directly linked to repo rate or treasury bill yields statement 1 is correct linked to repo rate T-bill yields and kon asibo and other benchmarks it improves monetary transmission this is also correct ये monetary transmission को improve करे faster rate exchanges दिए to borrowers it is applicable mainly to retail and MSME loans okay mainly for retail loans like home or personal MSMEs ठीक अछि this is also correct answer is 1 2 and 3
Consider the following statements regarding the qualitative tools of the monetary policy. They target specific sectors of the economy. This is correct. Qualitative tool to selective credit controls ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ the target specific sectors ଯେମିତି କି ହାଉସିଂ ହେଇଗଲା stock market ହେଲା agriculture ହେଲା ତ statement 1 correct ଅଛି margin requirements are an example. This is correct. Margin requirement ଦରକାର ମାନେ loan to value L2V L2V limits. Yes, this is a classic example. They affect overall liquidity in the economy. They do not affect overall liquidity. Actually ଏଟାକୁ quantitative tools ମାନେ କରନ୍ତି CRR ହେଲା repo rate ହେଲା. Answer above 1 and 2. Consider the following statements regarding CRR. It is maintained with RBI in cash form. Yes, this is correct. RBI द्वारा এটা maintain करा जाए in cash form. It earns interest for banks. This is incorrect. RBI किसी भी interest एतरे provide करेनी. It affects liquidity directly. Yes, it directly affects the liquidity. माने high CRR हेले कौन हबो less lending माने आरबीआई जदि सीआरआर रो लिमिट को बढ़ाई देला ताले बैंक मान को कोन करियो पड़िबो अधिका कैश आरबीआई पाखे रिजर्व कर रखियो पड़िबो सो ताको पाखे कम पैसा बळिबो टू लेंड सो इट इन्फ्लुएंसेस लेस लेंडिंग सो लिक्विडिटी विल डिक्रीज आंसर कोन हबो आंसर हबो 1 and 3. Consider the following statements regarding RBI functions. It acts as banker to the government. This is correct. Can I say receipt, payment date, ये सब government रा handle करे. It manages foreign exchange reserves. This is also correct. It issues currency notes except rupee 1 note. এটা भी correct আছে. And rupee 1 note ताहले किए issue करନ୍ତି? Ministry of Finance. Finance Ministry. Answer about 1, 2 and 3. Consider the following statements regarding the monetary policy stance. Expansionary policy increases liquidity. এটা correct ଅଛି. Expansionary policy ମାନେ କ'ଣ more liquidity, lower interest rate. Contractionary policy ହେଉଛି ତାର ଓଲଟା. Contractionary policy ଯଦି ତାର ଓଲଟା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରେ? ଏଟା inflation କୁ reduce କରିବ. Tight money. Neutral stance means no intervention by RBI. Neutral stance not equal to no action. It equals to ମୁଁ କହିଲି not equal to no action. It means RBI is ready to act based on condition. किसी कंडीशन रे आरबीआई एक्ट करि परिबो पैसिवली न हेले भी से किसी कंडीशन रे आरबीआई एक्ट करि परिबो सो आंसर हबो हमरो 1 and 2. Consider the following statements regarding the money supply.
M0 is also called reserve money. Reserve money or high powered money भी तो कुआ जाए. Correct अछि. M3 is most commonly used measure of money supply. Yes, we have discussed it before. M1 and M3 का आउ कौन कुआ जाए? Broad money. M1 include the time deposits. No. M1 रे time deposit include हुए नहीं. M1 रे only currency plus demand deposits include हुए. Answer above 1 and 2. Consider the following statements. Increase in CRR reduces the lending capacity of bank. Already discuss कर सके CRR बढ़िले कौन हबो? Lending decrease हबो. Decrease in repo rate encourages borrowing. Repo rate decrease हेले borrowing increase हुए. And this is incorrect. Increase in the reverse repo increases the liquidity. Reverse repo increase हेले कौन हबो? Liquidity absorb हुए, not increased. Answer above 1 and 2. Consider the following statements regarding RBI's regulatory role. It regulates the banking licenses. कहला कि आरबीआई कौन करे? बैंकिंग लाइसेंसेस को रेगुलेट करे. यस ऑफ कोर्स इट मैनेजेस एनपीएस व नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जहाँ कुआ जाए थ्रू लीगल फ्रेमवर्क्स. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. आरबीआई प्लेज रेगुलेटरी रोल हियर. इट डायरेक्टली कंट्रोल्स फिजिकल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट. फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल करा जाए, नॉट आरबीआई. सो आंसर अबाउट 1 and 2. Consider the following statements regarding the monetary transmission. It refers to the process through which policy rate change affect the economy. Yes, policy rate रे impact रोजी. It is always fully effective in India. नहीं, transmission issues exist करे. Fully effective India rate नुहे. Bank's balance sheet health affects the transmission. Yes, bank health matters. Answer above 1 and 3. Consider the following statements regarding the AI driven agri-food innovation. Read the statement and answer. Artificial intelligence can help in predicting crop yields and detecting the pests. Correct. Precision farming relies on satellite and sensor based data. Sensor of satellite. Yes. Digital advisory services provide only market price information to farmers. It is incorrect and digital advisory not only price also weather or crop advice भी से provide करा जाए इसे. Okay. It is incorrect. Answer of 1 and 2. With reference to the AI Agriculture Memorandum of Understanding in Odisha, consider the following statements. It involves collaboration between OUAT and Odisha State Open University. This is correct. आ भितर collaboration ହେଇଛି OUAT और State Odisha State Open University. It aims to promote AI based research in agriculture. AI research, yes, only large farms. It focuses only on large scale commercial farming. No, the focus includes small farmers too. Answer above 1 and 2. 43. CSR. CSR is mandated under the Companies Act 2013. Yes. एटा मन रखिए CSR कहाँ अंडर आसला? Companies Act 2013. Companies must spend 2% of average net profit on CSR. Yes. जो कंपनी माने एलिजिबल से माने कौन करिवे तांकर जहाँ भी एवरेज नेट प्रॉफिट होची से तार 2% CSR रे स्पेंड करिवे. CSR spending is entirely voluntary in India. No, not voluntary. This is mandatory for qualifying companies. Answer above 1 and 2. Aspirational District Program. It aims to improve socio-economic indicators. Yes, Aspirational District Program एइथପାଇଁ carry out करा जाउची केमती socio-economic indicators improve करिवो across the sectors. It focuses on health, education and agriculture. Focus areas health, education और agriculture होची. बिल्कुल correct. It is implemented only in the urban areas. No, mainly backward district और rural focus रोची एथरे. Backward district and rural focus.
So answer kon habo? Answer habo 1 and 2, option number B. With reference to Odisha's economic performance, consider the following. Odisha's real GSDP growth is higher than the national average. Generally eta national average tharu tar GSDP higher roji. Agriculture contributes more than industry to GSDP. Yes, agriculture contribution industry ଠାରୁ ଅଧିକା ରହୁଛି. ଏଟା ଯୋଉ କହିଲେ it is incorrect. Industry contributes more. Female labor force participation is higher than the national average. Female LFPR, it is relatively higher than the national average. This is correct. Answer above 1 and 3, option number B. Consider the following statements regarding the debt to GSDP ratio. Okay, theta statement ache, read them. It measures fiscal sustainability of a state. Yes, debt to GSDP ratio. Debt to GSDP ratio. एटा शो करे कि केते स्टेट रो केते डेट रही relative to its economy. How much debt a state has relative to its economy. So एटा fiscal sustainability पाई की गोटे key indicator. It a lower ratio indicates better fiscal health. Lower ratio माने कौन? Less debt burden और better fiscal health. This is correct. Answer above 1 and 2. Consider the following statements regarding the Baraputra Aitihya Grama Yojana. It aims to develop heritage villages linked to eminent personalities. Yes, जो heritage villages को develop करिया पाई एठी कुहा जाउची linked to eminent Odia personalities. It focuses on industrial development of rural areas. एटा incorrect kind of focus रहिबो एठी cultural बा heritage development रे not industrial development. It includes preservation of cultural and historical heritage. Yes, देखो statement 2 और 3 एठी दीटा को contradict करूची. So statement 3 एठी हमर correct हेजिबो काना एठी preservation of cultural और historical heritage को preserve करिया पाई एठी कुआ जाउछ. Answer अब 1 and 3. Consider the following statements regarding Odisha budget 2026-27. Agriculture and rural focus, rural development पे emphasize दिया जाइछि. Yes, it includes scheme for women empowerment. Obviously जेतेबेले budget pass होबो किछि ना किछि women empowerment पे scheme तो रहउ जो माने एटी schemes पढ़ी भी नांदी से माने एटी logic लगेई कि common sense लगेई कि भी answer करि परिबे. जेतेबेले budget pass होबो तो agriculture हे गला rural development पे isn't it obvious कि एमानक पई किछि provision schemes एतरे include थिबो. It completely eliminates fiscal deficit. How is it possible? ए question टा आपण पूरा common sense रे ही solve करि परिबे. This is incorrect. Answer above 1 and 2. No state eliminates it completely. Consider the following statement regarding the fiscal deficit. It is the difference between total expenditure and total receipt excluding the borrowings. This is correct. Fiscal deficit of formula kono? Fiscal deficit equals to total expenditure minus total receipt excluding the borrowings. It indicates the government borrowing requirements. It shows how much the government needs to borrow. So eta be correct achi. Answer is 1 and 2, option number C. Option C. Consider the, as your last question, consider the following statements regarding the Parivartan CSR initiative. Parivartan. It is implemented by the HDFC Bank. This is correct. এটা factual ଅଛି মনে ରଖିବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ CSR initiative ଟା କାହାର HDFC bank ର. It focuses on rural development and financial inclusion. Yes, rural development ହେଲା financial inclusion and livelihood support. ऊपर भी एटा focus करे. It operates only in the urban areas of Odisha. It is not limited to urban areas. Mainly एटा rural regions को target करूची. So answer अब हमरो 1 and 2. And with this question we have completed today's 50 questions. Thanks for your patience जो माने भी एबे भी एठी देखुचंती. And
Okay, so thank you for watching.